Assalamu alaikum students. This is International Islamic University Islamabad Schools Sahiwal campus. This is the first online lecture of mathematics grade 5 unit number 1 whole numbers. So first of all students, open your notebooks and books and bring your pencils and all the other stationery you need and listen to my lecture attentively. So in this chapter we will learn about the whole numbers. What's the whole numbers? Any of the number from counting is whole number. There is no fractional part and negative part in whole numbers. They are always positive numbers. काउंटिंग में कोई भी नंबर जो होगा वो हमारे पास होल नंबर होगा लाइक 1 2 3 4 18 20 100 10,000 2,000 all these numbers are whole number. There is no fractional part. So what's the fractional part? The fractional part is that in which we have numerator and denominator, like 1 over 2, 4 over 6, 8 over 9, 10 over 13. All these are fractional part. Negative number. What's the negative number? The numbers that have negative sign, all these are negative number. And you can say that numbers are less than 0. So in whole numbers, there is no fractional part and there is no negative part. So it's mean they are always positive numbers. Positive numbers are those that is greater than 0. So it's mean whole numbers are always greater than 0. You can say that whole number are always greater than 0. So if you look, they are starting from the 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This arrow shows that these numbers are infinite. They are countless number. Like they are going out like 100, 200, 300, 10,000, 11,000. All these numbers are whole number. But the point is that these numbers are starting from 0. Not less than 0, but greater than 0. The next thing is when you add 100 10 times, it gives you so now when you add 100 10 times, it gives you the 10,000. So this is 100, 100 plus 100, 200, 200 plus 100, 300, 300 plus 100, 400, 400 plus 100, 500, 500 plus 100, 600, 600 plus 100, 700, 700 plus 100, 800, 800 plus 100, 900, 900 plus 100. It's a 1000. So it's mean 1000 equal 1000. When you add 100 10 times, it gives you 1000. So the next example is 100,000. This is 200,000. This is 300,000. This is 400,000, 500,000, 600,000, 700,000, 800,000, 900,000, 10,000,000. And 10,000,000 will be equal to 1 million. It's mean when you add 100,000 to 10 times, it gives you 1 million. So now we will learn about the place value. What's the place value? In place value we have units, tens, hundred, thousand, 10,000s, 100,000s, millions. So we will start from the right side. The first number on the right side is unit. It's mean the value, place value of 6 is units. 8 is tens, 2 is hundreds, 7 is thousands, 4 is 10,000s, 1 is 100,000, and million is 3. So we read it as 3,147,286. स्टार्ट हम लोगों ने जो है वो राइट साइड से करना होता है और राइट साइड पे जो फर्स्ट नंबर होता है वो हमारे पास यूनिट होगा.
नेक्स्ट 80। अब इसके राइट साइड पे अगर मैं यहाँ पे 0 करती हूँ तो ये जो 8 है 1 0 के साथ मिलके क्या बन जाएगा 80। That's why the place value of 8 is tens. Now the second number is 2. So this is 0, this is 0. So it becomes 200. Now this is 7, and after 7 we have 3 zeros, so it becomes 1000. Now this 4, now we have 4 zeros, so it becomes 10,000 place value, but here is 40,000. Now this is 1, and after 1 we have 5 zeros, so it becomes 100,000. Now this is million. After 3 we have 1 2 3 4 5 6 6 0, so this becomes 3 million. We will read it as 3,147,286. Next topic is we have to tell what's the place value of red digit number and value of digit of the red digit. Okay, if you look at the first number 1234, so the right side number, we will start it from the right side. The fourth is ones, so we write it as 4 and we read it as 4 because this is a ones number. Next is 1 2 3 4. What's the place value of 3? Now after 3 we have one number, that is 4. So this is tens number, tens, and it becomes 30. जिसका हमने प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद जितने भी डिजिट होंगे हम क्या करेंगे, उन पे 0 लगा देंगे। अगर हमने उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है कि वो नंबर हमारे पास किस प्लेस वैल्यू पे है या उस नंबर की क्या वैल्यू होगी, हम क्या करेंगे कि उस नंबर के बाद जितने भी नंबर्स हो जाएंगे उनकी जगह हम लोग क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 30 था, 3 था, 3 के बाद एक नंबर है, तो हमने क्या किया, वहां पे 0 लगा देंगे, तो वो देख रहे हैं हम लोग कि टेंस बन जाएगा, और टेंस में क्या है 30। नेक्स्ट नंबर है 2। 2 के बाद 2 जीरोस है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 100। उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 100, और वैल्यू उसकी क्या बनेगी 200। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ है 1। आफ्टर 1 हमारे पास 3 जीरोस है, सो इट बिकम्स थाउजेंड्स प्लेस वैल्यू, और नंबर की वैल्यू क्या बनेगी 1000। नेक्स्ट हमारे पास है 9। हमें 9 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, तो 9 के बाद हमारे पास कितने जीरो हैं, 4 जीरोस बनेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू बन जाएगी 10,000। सो हम लोग 4 जीरोस लगा देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन गए 90,000। नेक्स्ट 8 के बाद हमारे पास 5 जीरोस हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 100,000। 5 जीरोस हम लगा देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया 800,000। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 7 के बाद हमारे पास 6 जीरोस है, और आपको पता है कि जब हमारे पास 6 जीरोस आ जाते हैं तो वो नंबर हमारे पास क्या चला जाता है, मिलियंस में चला जाता है। सो इट्स मीन इट्स 7 मिलियंस। अब मिलियन के बाद भी हम लोग क्या होगा, मिलियन का 10 होगा, टेंस होंगे, सो 7 जीरो मीन्स इट्स 10 मिलियंस, सो इट बिकम्स 50 millions. The next topic is, now I will tell you about, look at these bubbles. Look, ones, in ones you have two bubbles, you can say you have two balls. Let's assume these are the balls. In ones you have two balls, and in tens you have 1 2 3 4 5 6 7, you have 7 balls, and in hundreds you have 3 balls. So what does it becomes? We can write it as 300. Why 300? Because in 100 column you have 3 balls, and after 100 you have 2 zeros, so it becomes 300 plus, in tens you have 7 balls, so after tens you have one number, that is 0, so 70.
plus in ones you have 2 balls, so plus 2 equal 372. So it becomes 372. This is the expanded form and this is the number form, standard form. So write the following expanded form in number. So look 3. अब जितने भी आगे नंबर हैं उनकी जगह मैंने क्या लगा दिए, 0 लगा दिए. अब मैं क्या करूंगी कि ये जो 3 है इसके बाद जितने जीरोस हैं नेक्स्ट नंबर पे जाने के लिए आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे हमारे पास कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5. अब नंबर्स को ज्वाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये यहाँ पे इनको लिखना स्टार्ट कर देंगे. 0 की जगह क्या करेंगे, उस नंबर को लिख देंगे. When we write 5 or 6 digit number, we leave a space between thousands and 100 digits. हम लोग जब भी कोई 5 और 6 डिजिट नंबर लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 1000 और 100 के दरमियान में क्या करेंगे, स्पेस छोड़ देंगे. या तो आप स्पेस लिख सकते हो, छोड़ सकते हो, या फिर आप लोग कॉमा लगा सकते हो. सो जब मैं इसको लिखूंगी, फर्स्ट नंबर 3, आफ्टर दिस 4, after this 2, this 6, this 5, this 2 and this 3. अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पे 3 की क्या है, वंस, और यहाँ पे भी 3 की क्या थी, वंस. यहाँ पे 2 की क्या है, टेंस, और यहाँ पे भी 2 की क्या है, टेंस. यहाँ पर ये क्या है, 500, और यहाँ पे भी 5 की प्लेस क्या है, 500, हंड्रेड्स प्लेस है. यहाँ पे ये है 6000, और यहाँ पे भी 6 की प्लेस क्या है, 1000. यहाँ पर ये है 20000, और यहाँ पे 2 की प्लेस भी क्या है, 10000. यहाँ पे ये है 400,000, और यहाँ पे 4 की प्लेस भी क्या है, 100,000. नेक्स्ट इज मिलियन. सो यहाँ पे भी 3 की प्लेस क्या है, 3 million. So we read it as 3,426,523. So now student, this is your homework task. Do all the questions from page number 1 till 9 on your books. And the other activity is that also make any 2 examples of each topic that discussed in this lesson and write down these examples on your notebooks. Okay student, this is the end of our lesson. Allah Hafiz.